I hope my screen is visible to all of you. Is it? Yes, sir. Fine, thank you. So in this session, it will be a very short session. Okay. What is the issue faced by the aspirants while practicing essays? Is that like once they have the idea what to write or what not to write, they get certain classes and they discuss with their mentor, they discuss with their teachers. Okay, that we have to write our essays. But in this hustle of mains, what we forget, it is about writing continuously. It's not that you have to practice once in a week or twice in a week or thrice in a week. It's not like that, rather than consistency. Okay, at least once in a week should be there. Okay, so what people do, they try to practice essay writing in the last. Okay, they see that okay, we have enough the knowledge of the our GS. Okay, and then we will do all these essay writing and all. So in those last 1 month and 10 days, people are unable to do justice, I will say. Okay, they are unable to do justice. Okay, in such situations, they forget to write essays. And one essay is not enough per week. That's what I will suggest. Sometimes you are not even able to write one essay because on the weekends either you are writing optional test or GS test, especially July and onwards. So in this situation, what I suggest that you should write either framework or synopsis. What does this synopsis or framework means? The document that I had already shared with you is nothing but synopsis or framework. While writing synopsis or framework, we ensure that we will write full introduction, all the correcting paragraphs, all the quotations, all the linkers or the connectors that we are going to use. Okay, and full conclusion. Flip side idea should be there. In the end of session, I will share same document on the screen. Like what should be a mindset while writing synopsis. Okay, so again, going back to our first 4 lines, as it is being repeated in almost every session. So I'm just continuing with the tradition of our last 5 sessions. Candidates may be required to write essay on multiple topics. So 2 essays, one from 4, one from 4, both for section A and section B. They will be expected to keep closely to the subject. To keep closely to the subject, you have to read your essay topic again and again and again. There is no other method. Okay, so once you do this, you will keep calibrating whatever you're writing to the title topic or essay topic. Next, arrange their ideas in orderly fashion. When I say orderly fashion, it means either it should follow UPSC approach, PESL approach. There should be coherency as demanded by the UPSC. Coherency means last line of previous paragraph and next line of first line of next paragraph. They both should be connected. There should be proper chronology hierarchy. It's not like that once you talk about the individual, then you talk about the society. Yes, family do exist in between, so you cannot miss out. You can talk in this manner that you talk about the society, then family, then individual. It's fine, but you cannot miss out on the family side. When I say write concisely, it means short, crisp sentences. Your sentences should not be too long. Sometimes it makes your essay boring. Second, within a 1 page, there should not be more than 3 paragraphs. Means 4th paragraph, if you're writing, it should go to the next page. It should not be less than 2.5 paragraph. 2 long paragraph and half paragraph, which is continuing on the 2nd page. Even that is acceptable. Presentation do matters.
Credit will be given for effective and exact expression. Effective means closely to the topic. Exact means giving the meaning of the essay, explaining the flip sides as well. Very minute manner. Fine. Let's move to the second slide of this session. ये synopsis है क्या? What is this synopsis actually? Full introduction it is. Okay. Then next para. Use of connectors, quotes, linkers, whatever you say. Then every para idea should be there in the synopsis. Then flip side, whatever you meant or the hidden meaning of the essay should be there in the flip side. Second last para is nothing but connecting para to the conclusion. So if you're talking about the flip side, the second last paragraph will pave the way or pave the context for the conclusion. Okay. This is it. Now, what happens? You might not be having 1.5 hours for writing a full essay. But at the same time, in starting, a synopsis will take 40-45 minutes. But in the end, it will reduce to 20-25 minutes. And this is what you are going to do in the mains as well. If you have written for, say, 20-25 synopsis, that is quite possible. 2-3 synopsis per week, 7-8 weeks, you will be nearby 20. You will be having 20 introductions ready for your essays, 20 conclusions ready for your essays. People would have practiced anecdotes, and believe me, whenever you are writing any introduction second or third time, it becomes better, short, crisp with every practice. So rather than concentrating, I'll take all the questions at once, please, Parth. Okay. So while concentrating on the situation, what you have to do, you have to practice. Even if you're writing the introduction for your synopsis, try to write your introduction in second time while writing synopsis. First introduction, just jot it down certain points or just scribble it out in some rough page or something like that. Make a rough copy. This way you will be writing n number of essays within the stipulated time. Again, what to do? It will be same. I'm just repeating the last slide. Intermixing of thoughts, taking economy from the ecological perspective, ecology from the economical perspective, contextual clarity in what situation the statement has come, in what situation the essay topic has come, whether it has been related to something GST, whether China-India relations have some impact on the essay topic, means the recent context of the scenario. Then in any essay, India is not mentioned. It means you should go in one or two perspectives or dimensions beyond India, like national level, say international level की तरफ हम travel करने. Then multiple type perspectives means having one dimension with multiple perspective. One person view, second person view, third person view. Thought process, that's how you do it. Okay, with this, I open stage for certain questions. Okay, then I'll show what is the synopsis that just I shared in your respective channels. Please, one by one, ask your questions related to synopsis. If no questions, just type no in the chat box so that I can move further. सर वो एक बार सेकंड लास्ट पैरा जो था कंक्लूजन से पहले उसके बारे में बता दो सर, वो क्या है? ठीक है, but when I say कि second last para, okay, second last para, it means in flip side you might be talking in negative direction of the given topic. You might be talking something else which has not been directly mentioned in the your essay topic.
अब वहां से आप कंक्लूजन को लिंक करने में दिक्कत होगी, तो यू नीड अ सपोर्टिंग पैराग्राफ टू कंक्लूजन, दैट इज द सेकंड लास्ट पैराग्राफ. Am I clear, Prath? Yes, sir. Clear. Okay, fine. Yes, Kanik. सर मेरे को वैसे दो चीज पूछनी थी। ये साइनॉप्सिस का हमारा वैसे जैसे आपने कहा मोर देन वंस अ वीक, तो मतलब नहीं, मतलब एक वीक में एक ऐसे वाला तो बेटर है कि हम ज्यादा मतलब साइनॉप्सिस लिखें। तो मैं कितना टारगेट करें हफ्ते, मतलब ऑल्टरनेटिव डेज या मतलब? I used to write the year I scored exceptional mark in the essay. I will say I used to write 2 synopsis in a week and 1 essay in every 10 days. इन एवरी 10 days in the Okay. starting. In the Okay. end, I wrote like 2 full length test kind of things. So I used to write 4 essays in a week. ओके सर। So last 8 essay, like last 2-3 weeks, I wrote around I will say 6 or 4 essays. That's it. Total number of essays were like 12 or 13 around, and synopsis were around 22. ओके सर। I Sir, preferred more essays in the last. Reason for the same, I have prepared n number of synopsis. Whenever essay topics used to come, I was using same introduction and something. So that actually really helped me in the mains as well. ओके सर। सर Yeah. कंक्लूजन पे मतलब आगे हम बात करेंगे ना, मतलब कंक्लूजन में मेरे को मतलब इशू है। नहीं, कंक्लूजन में अब तो वही है कि आप राइटिंग करते हुए कॉल पे याद है, आइदर आई विल बी देयर और पीयूष विल बी देयर, हूसोएवर इज फ्री इज ओके। तो उसी पे बात होगी, मतलब सेशन नहीं है कंक्लूजन पे अब कोई मतलब स्पेसिफिक। ओके ओके सर, ओके नहीं, ओके सर, थैंक यू। या अभी थोड़ा सा कंक्लूजन सिनॉप्सिस में जरूर एक्सप्लेन करूंगा मैं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। Okay, so one question. Sir, how synopsis is different from brainstorming? Certainly, brainstorming do not follow any kind of flow. But when I say synopsis, I mean it how your first idea is going to be related to the second idea. I will just share the synopsis that how I used to think. Okay, so this was one of the best synopsis that I had in the good handwriting. So I will just share it. So your question will be addressed over there as well. Anyone else? So no, nothing in chat box, no hand raise. It means I'm done from my side. I'm going to the second part of the session. Okay. Just let me know if you can see the synopsis of mine. Could you please confirm if you can see the screen? Hello, am I audible? Yes, sir. It's visible. Okay, fine. Thank you. So revamping education is setting agenda for the next generation. Okay. So just look at the thing, how the things have been with me. Okay. So this is what, when I say 8 minutes, na, it means in 8 minutes I was ready with my introduction kind of things. Okay. Ravi educationist son अपने बेटे से बात कर रहा है और वो एक एजुकेशनिस्ट है. In our times we used to go to school with this slate, takti and chalk only. Takti to show the relevance in Hindi. Okay, grandson. Wow, Dadu, you were so lucky your school bag was not heavy as mine. So he was kind of bloating, I will say. ठीक है कि अरे हम तो उस जमाने में ऐसे जाते थे, तुम तो कितने लकी हो. He was निशब्द kind of thing, a quick wittiness. Okay, so this actually has happened in front of me. So I quoted same in my essay, and this is a good introduction, let me tell you. Ravi was shocked with the reply. He was thinking what kind of strides we have achieved in our education. Now just look at the things. मैं तुम लोगों की तरह एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं करने लगा, मैं पहले उसका फील दे रहा हूं कि हो क्या रहा है. डू वी नीड अ टोटल रिवैम्प? If with the present approach our next generation is ready with the changing world, as Nelson Mandela has quoted, this is something I will say you should improve rather than saying Nelson Mandela has quoted, envisioned. Okay, so this I changed while writing my essay. I rather than saying Nelson Mandela and all,
envisioned, cherished means उसके expression form में लिखने लगा मैं. Education is most powerful weapon which you can use to change the world. यहाँ पे क्या था? Revamping education is setting agenda for the next generation. 2 जनरेशन आपको दिख रही होंगी यहाँ पे विद इन द इंट्रोडक्शन. ठीक है, हाउ एजुकेशन रिवैम्प हुआ, तख्ती स्लेट से हैवी बैग्स तक. अब एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड. अब हमें चेंज वर्ड कर रहे हैं, मतलब आने वाली जनरेशन चेंज कर रहे हैं. दैट्स हाउ आई यूज्ड टू थिंक. ओके, दैट्स हाउ आई यूज्ड टू थिंक. नाउ पैराग्राफ, यू नो, जब यहाँ पे दे दिया पैराग्राफ 1 में, मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आई विल राइट अबाउट द गुरु शिष्य गुरुकुल परंपरा, जापानीज एजुकेशन सिस्टम, अकबर रिफॉर्म्स. ओके, ये वर्ड भी चेंज हो रहे हैं साथ के साथ. नाउ वुमेन एजुकेशन फैमिली सोसाइटी, तो इस सोसाइटी से उठा के लाया हूं मैं. नाउ व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू इवैल्यूएट माई सेल्फ एज वेल. तो ये जो लिखा है ना क्लब, इट मीन्स इन दोनों को एक साथ में क्लब कर सकता था, क्योंकि अब मैंने लिख दिया है synopsis. It doesn't mean कि synopsis gold है. I have to recheck ना. I'm improving day by day. Role of next generation in the society. Society में next generation का role क्या है? Context क्या है? Intolerance वगैरह उस टाइम डिबेट चल रहा होगा, अगर आपको याद होगा. Social interest, role of education, inclusive, marginals, LGBT, सब कुछ ले लिया इसमें हमने. ठीक है, मुझे पता है क्या करना है. और जब चेंजिंग वर्ड की बात कर रहे हैं एजुकेशन में, नॉर्थ और साउथ के लिए में क्या फर्क है? व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन दे नीड फॉर एजुकेशन, रोल फॉर इस्लाम एजुकेशन टू काउंटर ISIS. एग्जांपल इंडिया, हमारे मुस्लिम्स कभी ISIS ज्वाइन नहीं करते. देयर शुड बी 1 or 2 एग्जांपल्स. द काइंड ऑफ पॉपुलेशन भी है, बट स्टिल ISIS का प्रेजेंस नहीं आया उस टाइम पे. तो ये उस टाइम के मैंने ऐसे लिखा हुआ है, 2019 या 2020 का होगा ये. ठीक है, पैरा 5, जस्ट लुक एट द फ्लो. मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ. अभी IR पे है, IR से मैं आ रहा हूँ रोल ऑफ गवर्नमेंट पे. कैपेबिलिटी अप्रोच अमृत सेन. अब मुझे पता है अमृत सेन है, तो आई विल बी मेकिंग सर्टेन आई विल से पोजीशंस और कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच. तो वहां पे बहुत सारे कोटेशंस है, आई नो इट. अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे मुझे कोट नहीं याद होता तो मैं लिख दिया एजुकेशन इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट पेस बेस्ट इंटरेस्ट. नाउ ये था ना गवर्नमेंट. ये पैरा 6 मैंने अब यहाँ पे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तो मैं कोड ये यूज करूंगा, यहाँ से निकलूंगा कि गवर्नमेंट अगर एजुकेशन में पे करेगा तो बेस्ट इंटरेस्ट उसे मिलेगा गवर्नमेंट को. ठीक है, अब इंटरेस्ट कौन लेगा? नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट जनरेशन एजुकेटेड यूथ के. अब इससे क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा. समटाइम्स दैट इज राइट. अब सारा अगर मैं लिखने बैठूंगा तो यहीं पे 7-8 पैरा हो चुका है. Sometimes when you just brainstorm, what was the difference between brainstorming? Mindlessly just thinking about something is the brainstorming. ठीक है, if you ask me कि brainstorm ये कोई आइडिया है, ये यहाँ से भी सेम आइडिया से निकल रहे हैं, ये कोई फ्लो नहीं है. दिस इज व्हाट आई कॉल ब्रेनस्टॉर्मिंग. बट जब वही मैं ये फ्लो फॉलो कर रहा हूँ कि यहाँ से ये आइडिया निकल रहा है, यहाँ से ये निकल रहा है, this is what I call framework or synopsis. Brainstorming is about thinking of the ideas. Mindlessly लिखते रहो without a structure, you will get less marks. Para 7, sustainable development ऊपर mention किया. Intergenerational parity, बहुत तगड़ा वर्ड है. ठीक है, इसे मैं यूज कर ही लेता हूँ, you will understand better. ठीक है, intergenerational parity means equity between generations. We have not borrowed this earth from our ancestors, rather than not inherited our earth from our ancestors, rather than we have borrowed it from our next generation. So we have to give this earth in same position as intact as we have received from our ancestors, which is not happening. That is what intergenerational parity. If you look this concept, this can be used in your ethics paper as well. This is paper 3 concept as well, paper 2 as well, paper 1 society as well. That's how these keywords are there. ये अपने आप में आपको एक कीवर्ड दे देंगे. People ask me how can we generate such examples and all. अरे न्यूज़पेपर में आता है, कहाँ सोए रहते हैं आप लोग? दिमाग खोल के पढ़ना है, रट्टा मार के नहीं होगा. In terms of resource environment education, inclusiveness,
ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा सब विल लीड टू प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। अब यहाँ देखो, एज वी हैव सीन एजुकेशन इज प्रीमाइस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की बात की थी, कोटेशन भी ले लिया। अब इस चीज को मैंने इंप्रूव किया था, आई एम जस्ट लेटिंग ऑल ऑफ यू नो, as we have seen, rather than I will use now some kind of emotional thing. Okay, para 8, education development, role of science and technology, what kind of revamp we need, lab to land conversions, okay, women PWD representation, etc. Human resource present system based on British, कुछ भी कर सकते हैं हम add on. Paragraph 9, अब ना paragraph 9, 10 I know that I am about to end. विवेकानंद जी, साइंस वेस्ट प्लस स्पिरिचुअलिटी ईस्ट, ठीक है, यही बोला था। योगा, योगा मीन्स वो वाला योगा नहीं कि आसन लगाने बैठ जाएंगे अपन लोग, दिस इज अबाउट द समेशन। एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स बट द वैल्यूज। नाउ रिवैम्पिंग को मैं शेप दे रहा हूं कि कंक्लूजन में किस एरिया में जाके करूंगा। पैराडाइम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जो मैं सेकंड लास्ट पैरा की बात की थी, समवन आस्क्ड आई गेस पार्ट, ठीक है। अब ओके, सो आई विल नॉट बी एबल टू डेसिफर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे। साइंस प्लस वैल्यू, नॉलेज इकोनॉमी, पैराडाइम इनोवेशन प्लस एथिक्स, गुड गवर्नेंस। अब कंक्लूजन करने का देखो, ये मेरा वही सेकंड लास्ट पैरा शुरू हुआ है, ठीक है। बिल्डअप पैरा वो 2 पैरा में हो सकता है, कई बार मैं इन दोनों को क्लब कर दूंगा। देखा यहाँ पे जो ये चीज है, इट मींस आई यूज्ड टू क्लब। Therefore, we have to prepare our next generation in a way such as they don't suffer in the present challenges. For example, air pollution, communal rights, etc. Moreover, they act as a problem solver for the future. ठीक है? For example, using scientific knowledge to attain land degradation neutrality. उठा के डाल दिया. But this is possible only when we revamp our education. ठीक है? The government at the world level can follow. अब ये थोड़ा मैं तुम्हें सही बताऊं, GS टाइप को इंट्रोडक्शन था जो मैंने लिखा है, बट हेयर इट इज नॉट समथिंग की मतलब सॉरी कंक्लूजन था, इट इज नॉट समथिंग आई वांट टू शो कंक्लूजन रादर देन द आइडिया। If I have written this idea, I will certainly frame better when I will write it next time. Okay, how the my essay become good, वहां पे मुझे फील आ गई थी कि आई एम नॉट दैट गुड, ओके, बिकॉज यहाँ पे हो गया था शुरू ना। तो यूजिंग अगेन सेम दिस अप्रोच की बिल्डअप वाला, the government at the world level can follow Gurudev Rabindranath Tagore to create a world where the mind is without fear, the head is held high, where knowledge is free, which will ensure that global best practices will be adopted. अब free है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के पैसे नहीं लगेंगे, ये दिमाग में चल रहा है। So proper mixture of science and technology along with the value based will make the whole world one. जब सब कुछ फ्री है तो वो वन बनेगा, वसुदेव कुटुंबकम, and will reduce the weight of school bag of the child mentioned initially. If you remember, connecting to the first thing, that is how I ended up. I will not say this is one of the very good essays, but the flow that I wanted to take you through synopsis, through this only framework, I would have taught it better. Okay, with this, I'll stop screen sharing. Okay, so there's certain yes, okay, fine. I think so this is all from my side. Okay, as promised, this will be a very short session because I just wanted to tell you how to practice n number of essays in a stipulated time. Okay, rather than ignoring essay, we can have synopsis. Some essays on every interval. I will suggest write one full length essay from now onwards in every 8 to 10 days. And if you're good, then write in every 4 or 5 days. Apart from that, nothing else to be worried upon. That's all. Okay, so if you guys got any questions, just let me know. Else, yeah, connect. सर आपके जो ये साइनॉप्सिस था, तो इसमें जो पर पैरा हम टॉपिक को टच कर रहे थे, तो आपने कहा था कि हमें थोड़ा सा डेप्थ को भी टच करना होता है। तो सर मतलब आपका आइडिया साइनॉप्सिस की तरफ में ये था कि मैं इन बारे में बात करूंगा, हो पाया तो ठीक है, एक आध चीजें छोड़ सकता हूँ, या मतलब मुझे लग रहा है आप थोड़ा ज्यादा मतलब हो जाता है क्या, मतलब इतना टारगेट, मतलब आप एक ही पैरा में काफी बातों पे बात करने की सोच रहे हैं? नहीं, तो मुझे पता ना कि किसी में डेप्थ में जाऊंगा तो नेक्स्ट पैराग्राफ में वो इंक्लूड नहीं करूंगा। इट डजंट मीन ना कि जो भी आ रहा है फ्लो में उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई टोल्ड, व्हेन यू मेक अ फ्रेम और से फ्रेमवर्क और सिनॉप्सिस,
whatever you will write, it will be little different and better. राइट करते करते वहां पे आइडिया आया, अब जरूरत नहीं लग रही उसकी बिकॉज आई एम इन द फ्लो, उड़ा दिया. इफ यू हैव n नंबर ऑफ ऑप्शंस, इजी टू चूज वन ना. यस सर. सर आपने पैराग्राफ 7 बनाए, 7 पैराग्राफ 6 पेज में खत्म हो गए आपके, क्या करोगे? यस सर. तो मत लिख के आना, फिर मिलेगा 40 नंबर 80 टोटल. हाँ सर. फिर एक और चीज थी कि जैसे वी आर टारगेटिंग 8 to 10 पैरास मतलब और मोर, तो हर No, पैरा. I don't say 8 to 10. Don't copy mine. Na. This was my framework. It might be the case that within one paragraph you are taking 2-3 dimensions. That is your writing style. This is just a kind of a way to tell you. I was comfortable this way. Na. It might be that some of you will go on a different paragraph for the perspective. If you know, if you observe that within the para, sometimes I gave 2-3 perspectives. It means un paragraph mein main deeper gaya na. As I contexted. समझ में आया? यस सर. मेरा वो क्वेश्चन थोड़ा उसी साइड में था कि पैरास मतलब वही कि अगर मैं डीपर जाता हूँ तो पैरास कम हो जाएंगे, बट मतलब डायमेंशंस भी ज्यादा रखने हैं और कुछ कुछ सिलेक्टिव को मैं नहीं, कुछ सिलेक्टिव में तुम्हें डीप जाना, वेयर यू फील कंफर्टेबल, वी आर स्ट्राइकिंग द राइट कॉर्ड्स, देयर यू कैन गो. जहां पे राइट कॉर्ड्स नहीं स्ट्राइक हो रही और फील आ रही है तो वहां पे डीप क्यों जाएगा? मान ले पैराग्राफ बर्बाद हो रहा है, तुझे फील आ जाती है कई बार लिखते हो दोस्त, तो व्हाई टू गो इन दैट डायरेक्शन? रोक लो ना अपने आप को वहीं पे. ओके सर. ओके अभिराज. तो जैसे हम किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं तो सपोज लाइक वी आर रिलेटिंग इट टू द इकोनॉमी, तो शुड वी मेंशन इट ऑन द टॉप कि हम इकोनॉमी के बारे में अब लिखेंगे या फिर उसको फ्लो में चलने दें नॉर्मल? फ्लो में चलने दें, दैट्स व्हाई यू यूज कोटेशंस ना. हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है इनको कि हमारा आइडिया क्या होगा इस बारे में. वो तो मैंने अपने माइंड में रखा ना. कोटेशंस किस लिए यूज कर रहा था मैं? आपने देखा ना बीच में कोटेशंस में यूज कर रहा हूं, इसीलिए ना. ठीक है. एनीवन एल्स? सर इसी में आपको सिनॉप्सिस में फ्लिप साइड क्या है? फ्लिप साइड आपने देखा नहीं क्या था रिवैम्पिंग का? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. आरंट बी गोइंग इन द बैक साइड. पैरा 9 इज देयर. यस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. तो फ्लिप साइड नहीं हुआ आपके हिसाब से? वी ड्रॉप वैल्यू बेस्ड एंड वी मूव टू द मॉडर्न साइड एंड देन वी आर लुकिंग बैक अगेन एट द दैट वाज माय माइंडसेट ना. Flip side is something what how you want to portray. It's not always negative, यार. Flip side is a hidden agenda as well, as I told you in one of the session. Okay. जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव हर बार क्यों ढूंढना? उसका हिडन एजेंडा देखो ना. बट इन दिस essay I consider this as a flip side. That's why I said. Okay. Okay. Next. सर स्टार्टिंग में कौन सा टॉपिक चूज करें? फिलोसफिकल टाइप या जीएस टाइप वाले सिनॉप्सिस क्वेश्चन? अरे यार ये वन ऑफ प्योर लाइक गो विद एनी ना. स्टार्टिंग क्या होता है मतलब प्रैक्टिस है, अपने घर में कर रहे हैं ना. डू इट. डोंट गो विद द प्री कंसीव्ड माइंडसेट व्हाइल इन प्रिपरेशन, व्हाइल इन एग्जामिनेशन. कैसे करना? प्ले द बॉल एंड मेरिट. इफ यू फील कंफर्टेबल विद द जीएस टॉपिक, गो फॉर इट. इफ यू फील द फिलोसफिकल साइड, go for it. Once you're stable with any, go for the next one. That's it. Kanik और अभिराज और कोई क्वेश्चन है क्या? Because your hands are still raised, so I'm confused. Okay. Yes, Sparsh. सर मेंस में जब हम ये सिनॉप्सिस बनाएंगे तो क्या अलग से रफ पेज बना के ऐसे उसको करें और काट दे बाद में, या पीछे होता नहीं है क्या? उसको क्या शुरू में कब कहाँ लास्ट में एक पेज होता नहीं है क्या? अच्छा ठीक है. इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो 2-3 पेज थोड़े लगेंगे. आई यूज्ड टू टेक हाफ पेज फॉर माय सिनॉप्सिस व्हेन आई वाज राइटिंग माय मेंस. तब आइडिया की जगह जैसे यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा लिखा था तो गुरु लिख दिया, तो शिष्य परंपरा थोड़ी लिखूंगा, गुरुकुल पूरा थोड़ी लिखा मैंने फिर. ठीक है सर. हाँ 3-4 पेज होते हैं लास्ट में शायद, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? आई डू रिमेम्बर कि मैंने लास्ट के 2 पेजेस में सब कुछ चल गया. 3-4 पेज आई डिड नॉट यूज. उसका भी मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, क्योंकि आप बार बार देखोगे 3-4 पेज लिखोगे तो बार बार 3-4 पेज खोलने पड़ेंगे. विद इन 1 पेज सारा काम कर दोगे तो यू विल बी लुकिंग एट 1 पेज ओनली. सो आई यूज्ड टू प्ले विद माय माइंड. ओके, सो ये क्लियर होता था मुझे. यूपीएससी आज तक मेरे को एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हरा पाई है. एग्जामिनेशन हॉल के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें भले ही हरा दिया, सीधी सी बात है.
ठीक है, आई विल नॉट पैनिक ओवर देयर। अब 4 पेज हूँ, 4 पेज में अरे वो पैरा 9 लिख रहा था, कहाँ लिखा है, मान लो अगर नहीं ढंग से मेंशन किया, एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। अब एक पेज है, वहां कहीं तो ध्यान जाएगा ना, बट यू हैव टू राइट क्लीन, दैट्स इट। मतलब स्क्रिबल करो अपना जितना भी कर सकते हो। अब बाकी जो मैं कह रहा हूँ, ये गंदी हैंडराइटिंग है, बट वो हैंडराइटिंग मुझे समझ में आएगी और किसी को नहीं आएगी। बट ऐसा नहीं है कि उसमें मेरे को खुद ढूंढने में पॉइंट मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एनीवन एल्स? No, so let me stop the recording. Then I'll discuss certain questions. Yes, Kanik. सर जैसे अभी टॉपिक्स ऐसे प्रीवियस ईयर्स के उठा लूं, मतलब ऐसे के, या मतलब ट्रेंड तो बेसिकली आजकल मतलब प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स को ही टारगेट करना सही रहेगा ना, या मतलब वैसे टेस्ट का कुछ उठाना चाहिए? See, I always say 2-3 things. Okay. First thing, test papers are good if you want to practice something new. Okay, get it evaluated and all. Okay, and I never ever say कि यार PYQ should be or not, because UPSC is the only body which can make UPSC level question. बाकी कुछ नहीं. Though I own an institute, but I will not say the same कि I can make the UPSC level question. I will be always near to them or below them. I cannot make like them. So PYQs करोगे तो best है. ओके सर। Okay, but एक सरप्राइज एलिमेंट के लिए बेटर है कि थोड़ा इधर उधर भी चले जाएं। ज्यादा नहीं, अगर मान लो 10 ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 3 इधर उधर से कर लो, 7 PYQ उठा लो। That's all. Okay, let me stop.